Hi everybody, welcome to this lecture on the chapter of integration. We'll start by understanding the graphical meaning of integration. Guys, आप यहाँ देख सकते हो that we have a graph of the function y is equal to f of x. Now guys, if we take area of this graph with respect to x-axis, this represents the integration of this function between the values x equal to x1 and x equal to x2. तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि जो येलो कलर का एरिया है दिस रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू एक्स वन एंड एक्स इक्वल टू एक्स टू. सो लेट्स लुक एट द प्रूफ ऑफ दिस कंसेप्ट. गाइस अगर हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया, द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस फंक्शन एंड द ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी स्मॉल चेंज इन एक्स नोन एज डी एक्स. तो गैस अगर हमने y और dx को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल जिसको मैं कलर कर रहा हूँ. नाउ गैस इफ वी ऐड द एरिया ऑफ ऑल स्मॉल रेक्टेंगल्स विच आर सिमिलर टू दिस, इससे हमें टोटल येलो कलर का एरिया मिल जाएगा. सो गैस फॉर दिस वी विल डू इंटीग्रेशन ऑफ y dx बिटवीन x इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2. बट गैस y इज इक्वल टू f of x and therefore area becomes equal to integration from x1 to x2 f of x dx. So guys in summary, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है y is equal to f of x और अगर आप उसका इंटीग्रेशन करते हो इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, then you get the area of the function with respect to x axis. So with this we have completed the graphical meaning of integration. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, now let's look at some formulas of integration. So guys, let's say we have the function y is equal to sin x. In this case, if we take derivative of y, we will obtain dy by dx as equal to cos of x. Guys, हम सबको पता है that derivative of sin x is cos x. Now we'll multiply this dx on the right hand side and therefore the equation will become dy is equal to cos of x dx. Now guys, we'll integrate on both sides. So when we integrate on both sides, we will obtain integration of dy is equal to integration of cos x dx. अब guys, integration and derivative are opposite of each other. इसीलिए guys, left hand side पे integration and derivative will cancel out and therefore on the left hand side we'll obtain y and this will become equal to integration of cos of x dx. लेकिन गैस अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो y की वैल्यू इज इक्वल टू साइन एक्स. देयरफॉर विल ऑब्टेन द फॉर्मूला एज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx will become equal to sin of x and along with this we have to add a constant of integration which is plus c. So this is the first formula of this chapter. Integration of cos of x dx is equal to sin of x plus c. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, as seen in the last slide, integration of cos of x dx is equal to sin of x plus c. Guys, इसको याद रखना बहुत आसान है. Guys, we know that derivative of sin of x is cos of x and therefore integration of cos of x will become sin of x plus c. यानी कि guys, integration is always opposite of derivative. Now using similar logic, हम बाकी के formulas भी derive कर सकते हैं. Now guys, we know that derivative of cos of x is minus sin of x and therefore integration of sin of x dx will become equal to minus cos of x plus c. Moving ahead guys, derivative of tan of x is sec square of x and therefore integration of sec square of x will become equal to tan of x plus c. Using similar logic, derivative of cot of x is minus cosec square x and therefore integration of cosec square x dx will become equal to minus cot x plus c. Also guys, derivative of sec of x is given by sec x into tan x and therefore integration of sec x into tan x will become equal to sec of x plus c. Finally guys, derivative of cosec of x is equal to minus cosec x into cot x and therefore integration of cosec x into cot x is equal to minus cosec x plus c.
तो यारो आप यहाँ देख सकते हो ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर इंटीग्रेशन। तो आप देख सकते हो गाइस कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स is equal to minus cot x plus c, and finally integration of sec x into tan x dx is equal to sec x plus c, and integration of cosec x into cot x dx is equal to minus cosec x plus c. So with this we have completed 6 formulas. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, after the formulas of trigonometry, let's look at other functions and their integration. Guys, let's say we have the function y is equal to e raised to x. Guys, हम सबको पता है that derivative of e raised to x is e raised to x. Therefore, guys, if the derivative of e raised to x is e raised to x, so we can also say that integration of e raised to x will again become e raised to x plus c. Moving ahead, guys, if we have the function y is equal to a raised to x, in this case, derivative of a raised to x will become equal to a raised to x into log of a to the base e. Now guys, we'll multiply dx on the right hand side. So the equation becomes dy is equal to a raised to x into log of a to the base e into dx. Now we'll integrate on both sides. और जैसा मैंने आपको पहले explain किया था, on the left hand side, integration and derivative will cancel out because they are opposite of each other, and on the left hand side we will obtain y, and this will become equal to log of a to the base e outside the integration into integration of a raised to x dx. Guys, आप यहाँ notice कर सकते हो that on the right hand side ये जो log of a to the base e है, it is a constant and therefore I have taken it outside the integration. Now guys, we'll divide this on the left hand side and we'll obtain the value as integration of a raised to x dx is equal to y upon log of a to the base e, and we'll also add a constant of integration which is plus c. अब guys, y की जो वैल्यू है it was equal to a raised to x, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे and we'll obtain the answer for integration of a raised to x dx is equal to a raised to x upon log of a to the base e plus c. So guys, in summary, in this part of the video, we have seen two formulas. Integration of e raised to x dx is just equal to e raised to x plus c. And guys, integration of a raised to x dx is equal to a raised to x upon log of a to the base e plus c. So with this, we have completed this part of the video. Let's move ahead to the next slide. Yes, students. Now let's look at the function y is equal to log of x to the base e. Guys, the derivative of log of x to the base e is given by 1 upon x, and we know that integration is exactly opposite of derivative. इसीलिए guys, हम ऐसा लिख सकते हैं that integration of 1 upon x dx will simply become equal to log of x to the base e plus c. Guys, आप यहाँ notice कर सकते हो that in every formula we are adding constant of integration. इसका भी लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. Guys, the graphical meaning of integration is area of the function between the values x equal to x1 and x equal to x2. लेकिन guys, because यहाँ पे x1 and x2 की वैल्यू मेंशन नहीं किए हैं, इसीलिए it is not possible for us to find the exact area. Therefore guys, we add the constant of integration which is plus c. So guys, with this we have completed 9 formulas. Now let's move ahead to the next slide, in which we'll look at integration of some really interesting functions. Yes students, now let's look at the integration of the function 1 upon under root of a square minus x square. Guys, to solve this integration, we'll do a smart substitution. We are going to substitute x is equal to a sin theta. Guys, हम x equal to a sin theta इसीलिए substitute कर रहे हैं because inside the under root we'll end up obtaining the function 1 minus sin square theta, which can be written as cos square theta. Now guys, once we substitute x equal to a sin theta, we'll take derivative on both sides. Guys, the derivative of function x is just 1,
and on the right hand side derivative of sin theta will be given by cos theta and will also have to multiply by d theta by dx. गाइस राइट साइड में हम लोग d theta by dx से इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज वी आर टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x and the right hand side function is with respect to theta. Now guys, we'll take dx on the left hand side and through this we'll obtain dx as equal to a cos theta d theta. Now guys, we'll substitute this into the main integration and along with this we'll also substitute the value of x which is a sin theta. So after substitution our integration will become integration of a cos theta d theta divided by अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब गैस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर विल सिंपली बिकम ए. सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए इंटू इनसाइड द अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब गैस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज जस्ट कॉस स्क्वायर थीटा and under root of cos square theta will become cos theta. So guys, this value and this value will cancel out and also a will cancel out. So guys, we'll end up obtaining integration of 1 dot d theta. अब guys, यहाँ पे भी आपका integration और derivative cancel होता है and therefore your final answer of this integration will become theta plus c. अब बस हमें theta की value back substitute करनी है. Guys, we had substituted x equal to a sin theta. इसका मतलब स्टूडेंट्स x अपॉन a विल बिकम इक्वल टू साइन थीटा एंड देयरफॉर थीटा विल बिकम इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a. तो ये जो थीटा की वैल्यू है ये हमें फाइनल आंसर में सब्स्टिट्यूट करनी है एंड थ्रू दिस विल ऑब्टेन द आंसर एज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c. सो गाइस, टू समराइज, आपके पास कभी भी अगर ये फंक्शन आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और गैस आपको इसका अगर इंटीग्रेशन लेना है तो इसका फाइनल आंसर आता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रूफ ऑफ दिस इंटीग्रेशन. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स लुक एट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. गैस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए विल हैव टू डू द सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a tan थीटा. कैसे हम x इक्वल टू a tan थीटा इसीलिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा एंड उससे ये इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा. नाउ गाइस, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a tan थीटा विल हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. गाइस, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x विल सिंपली बिकम 1 एंड ऑन द राइट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय d theta by dx. Now we'll take dx on the left hand side and through this we'll obtain the equation dx is equal to a sec square theta d theta. अब guys, जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन है उसमें हम dx के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे a sec square theta d theta and along with this in the denominator we'll substitute x as equal to a tan theta. guys, इससे हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a sec square theta d theta divided by ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा. अब गैस यहाँ डिनोमिनेटर में हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे एंड थ्रू दिस आर इंटीग्रेशन विल बिकम ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. अब गैस ये जो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है इट इज सिंपली सेक स्क्वायर थीटा, सो इट विल कैंसल विद द न्यूमरेटर एंड गैस 1a विल ऑल्सो कैंसल आउट. सो हमारा आंसर बच जाएगा integration of 1 upon a into d theta. अब guys, a is a constant and therefore it can be taken outside the integration. So this becomes 1 upon a integration of 1 dot d theta. अब guys, यहाँ पे भी integration and derivative will cancel out and therefore the final answer that we'll obtain is 1 upon a into theta plus c. अब guys, हमें बस theta की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करनी है. So guys, we had taken the substitution x is equal to a tan थीटा. इससे गैस हम लिख सकते हैं x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा एंड देयरफॉर स्टूडेंट्स थीटा विल बिकम इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाय a. तो गैस ये थीटा की जो वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द फाइनल आंसर एंड सो विल गेट द आंसर एज 1 अपॉन a
into tan inverse of x by a plus c. So guys, in summary, whenever you have the integration 1 upon a square plus x square dx, this will simply become equal to 1 upon a tan inverse of x upon a plus c. So guys, with this we have completed this proof. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, now let's look at the integration of 1 upon x into under root of x square minus a square. Guys, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए we will substitute x equal to a sec theta. Guys, when you substitute x equal to a sec theta, then inside the under root you will end up obtaining the function sec square theta minus 1, which can simply be written as tan square theta. अब guys, हम यहाँ पे दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे. On the left hand side, derivative of x will be 1, and on the right hand side, derivative of sec theta will be sec theta into tan theta into d theta by dx. Now guys, we'll take dx on the left hand side, and through this we'll obtain dx as equal to a sec theta tan theta into d theta. Guys, ये जो dx की वैल्यू है ये हम ओरिजिनल इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, and in the denominator in place of x we will write a sec theta. So guys, our integration will become integration of a sec theta tan theta d theta, and in the denominator outside the under root we will have a sec theta, and inside the under root we will have a square sec square theta minus a square. अब guys, फिर से हम अंडर रूट के अंदर a square कॉमन लेंगे, and under root of a square will become a. And guys, through this we'll obtain the integration as integration of a sec theta tan theta d theta divided by a sec theta into a into inside the under root we'll have sec square theta minus 1. अब guys, यहाँ पे जो sec square theta minus 1 है, it is simply tan square theta, and under root of tan square theta will become tan theta. So this will cancel with tan theta of the numerator. Along with this, sec theta will also cancel out, and 1a will also cancel out. So guys, we'll be left with integration of 1 upon a into d theta. अब guys, फिर से जो a है it is a constant, so we can take it outside the integration. So we'll have 1 upon a integration of 1 dot d theta. अब guys, यहाँ पे integration and derivative will cancel out, and we'll obtain the answer as 1 upon a into theta plus c. अब guys, as always हमें यहाँ पे जो थीटा है उसको बैक सब्स्टिट्यूट करना है. सो वी हैड टेकन x इक्वल टू a sec थीटा. सो guys, x अपॉन a विल बिकम इक्वल टू sec थीटा, एंड देयरफॉर थीटा विल बिकम इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x बाय a. सो ये जो वैल्यू है थीटा की, वंस वी सब्स्टिट्यूट दैट इनटू द फाइनल आंसर, विल गेट द आंसर एज 1 अपॉन a sec इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c. सो guys, in summary, whenever we have integration of 1 upon x into under root of x square minus a square, then the answer of this integration is given by 1 upon a sec inverse of x by a plus c. So with this we have completed this integration. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, now let's look at the last integration of this video. Guys, here we have the function 1 upon x square minus a square. Guys, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर. सो गाइस, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वी कैन सिंपली राइट दिस एज एक्स माइनस ए इन वन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए इन द सेकेंड ब्रैकेट. अब गाइस, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए वी विल हैव टू सेपरेट द डिनोमिनेटर, एंड इस कंसेप्ट को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन. Guys, to separate the denominator, we will use basic mathematics, and through this, we'll obtain the answer as 1 upon x minus a minus 1 upon x plus a whole multiplied by 1 upon 2a. Guys, ये जो step है, ये मैं आपको अच्छे से explain कर देता हूँ. Guys, if you solve the answer, you will obtain the equation as 1 into x plus a minus 1 into x minus a. इसका मतलब गाइस, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एंड वंस वी क्रॉस मल्टीप्लाई विल ऑब्टेन द न्यूमरेटर एज एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए. गाइस, वंस यू सॉल्व द न्यूमरेटर, एक्स एंड माइनस एक्स विल कैंसल आउट, एंड यू विल ऑब्टेन a minus of minus a, which simply becomes 2a.
अब गैस ये जो न्यूमरेटर में 2a है, it will cancel with the 2a in the denominator, and through this you will obtain the same original function 1 upon x minus a into x plus a. So guys, in summary, आपका जो ये फंक्शन है 1 upon x minus a into x plus a, आप इसको मॉडिफाई करके लिख रहे हो, which can be written as 1 upon x minus a minus 1 upon x plus a whole multiplied by 1 upon 2a. Now guys, 1 upon 2a is constant, so we'll write it outside the integration and we'll obtain 1 upon 2a into integration of 1 upon x minus a minus 1 upon x plus a dx. अब guys, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत आसान है. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस e. यानी कि गाइस यहाँ पे जो 1 अपॉन x माइनस a है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log of x minus a to the base e, and after this we have a minus sign, and guys उसके बाद जो 1 upon x plus a है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log of x plus a to the base e. अब गैस दो लॉगरिथम के बीच में अगर माइनस साइन रहे तो उसके जो इनर टर्म्स है उसको आप डिवाइड करते हो. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम दैट वेन एवर यू हैव सब्सट्रैक्शन बिटवीन लॉगरिथम यू विल हैव डिविजन इनसाइड लॉगरिथम. तो गैस आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a टू द बेस e प्लस c. सो गैस इन समरी वेन एवर यू हैव द इंटीग्रेशन 1 upon x square minus a square dx, तो your final answer will be 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a to the base e plus c. So guys, with this we have completed this integration as well. Now let's move ahead to the next slide in which we'll summarize the entire lecture. Yes students, now let's look at the summary of today's lecture. Guys, the first point that we learnt in today's lecture was that integration of any function f of x dx between the points x1 and x2 is simply equal to area of the function with respect to x-axis between the points x1 and x2. After this, we have seen a bunch of formulas. Let's revise all of them. Guys, we have seen that integration of sine of x dx is equal to minus cos x plus c. And similar to this, we have integration of cos of x dx which is equal to sine of x plus c. इसके अलावा guys, next formula हमने देखा था that integration of sec square x dx is equal to tan of x plus c. And similar to this, we have integration of cosec square x dx which is equal to minus cot x plus c. Moving ahead, we have two more formulas of trigonometry. Integration of sec x tan x dx is equal to sec of x plus c. And guys, similarly, integration of cosec x into cot x dx is equal to minus cosec x plus c. After this, we had seen two formulas of exponential functions of integration. These formulas were integration of e raised to x dx is equal to e raised to x plus c. And guys, integration of a raised to x dx is equal to a raised to x upon log of a to the base e plus c. Moving ahead, we have also seen that integration of 1 upon x dx is simply equal to log of x to the base e plus c. इसके बाद guys, we have seen proof of 4 formulas of integration. Let's revise all these 4 formulas. Guys, the first formula was integration of 1 upon under root of a square minus x square dx, and this is equal to sine inverse of x by a plus c. After this, we have integration of 1 upon a square plus x square dx. Guys, इसका आंसर आता है 1 upon a tan inverse of x by a plus c. Moving ahead, guys, the last two formulas were integration of 1 upon x into under root of x square minus a square dx, and this comes out as 1 upon a sec inverse of x by a plus c. And finally, guys, we have integration of 1 upon x square minus a square dx, and this comes out as equal to 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a to the base e
plus C. So guys, with this we have completed the revision of this entire lecture. I hope you had a lot of fun watching this video. I will see you in the next video.